Good morning, my dear students and my dear friend. This is Sudhir and welcome you all on today's class. And today we are going to start our new topic and that is types of fraction. क्या है आज का टॉपिक का नाम? Types of fraction. Okay. So without wasting any time, let's begin with the types of fraction. So today we are going to start a new topic. The new topic name is types of fraction. So first of all, in brief, we will discuss in brief later, but first of all we have to write down the 6 types of fraction. ठीक है, 6 टाइप के फ्रैक्शन है, 5 टाइप के नहीं है. Okay, so now there is a 6 types of fraction. The first fraction is, that means the types of fraction is like fraction, then a like fraction, then unit fraction, then proper fraction, then improper fraction, देन मिक्स्ड नंबर या फिर इसको बोला जाता है मिक्स्ड न्यूमरल. ओके, लिसन डियर स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द मिक्स्ड नंबर्स बोथ आर रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग, बस लिखने का तरीका अलग अलग है. मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है. बेसिकली देर इज 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, बेसिकली 5 ही है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और जो आपका मिक्स्ड नंबर है वो दोनों सेम तरह के फ्रैक्शन है, बस लिखने का तरीका अलग है. You can say that it is 6 types of fraction or you can say the 5 types. The mixed number is a type of fraction which is related with the improper fraction. ठीक है? Okay. So there are 6 types of fraction and the first one is a like fraction. Second one is the unlike fraction. Then unit fraction, then proper fraction, then improper fraction and then mixed numbers. So today we will discuss about that. Okay. So without wasting any time, let's begin with the types of fraction. So the first type of fraction is a like fraction. Yes, my dear students, the first type of fraction is called is the like fraction. And what is meant by like fraction? So the fraction having the same denominator. Okay. The fractions, बहुत सारे fractions having the same denominator is called as the like fraction. Very good है जी. If the denominator is same, then it is like fraction. अच्छा ठीक है जी. If the denominator is same, then it is like fraction. Okay जी. But if the denominator is same, what does it mean? इसका मतलब क्या? बुक में तो लिखा नहीं है. Now we have to understand. So everyone focus towards me. Okay, focus on the board. If the denominator is same, what does it mean? It means that in all the fraction, the total number of parts are equal. फिर से बोलता हूं. In these 3 fraction, denominator is same. If the denominator is same, it means that these 3 fractions have total number of parts 4, 4, 4. अब सबका equal 4, 4 है. Yes. If the denominator is same, that means 4, 4, 4. So all these 3 fractions have the total number of parts 4. सबके total number of parts equal होने चाहिए. Then we can say that it is a like fraction. ठीक है. So what is meant by like fraction? The fraction having the same denominator, that is called as like fraction. Or in other words, we can say that if there are some fraction having the same number of, that means if the fractions have total number of parts equal number of total number of parts जो है वो equal होने चाहिए, then we will say that it is a like fraction. Understood? Okay. So in this example, it is 1 by 4, 2 by 4 and 4 by 4. So here the denominator is same and it is indicating that all the fractions have to 4 parts, 4 equal parts. इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है. इसीलिए ये like fraction है. I hope you understand. Now let's move towards the unlike fraction. So what is meant by unlike fractions? So the definition of unlike fraction is if the fraction have a different denominators भाई भाई नहीं है, अलग अलग है. Okay, so let's take example 1 by 2, 1 by 4
and 3 by 8. Okay, dear students, it is example is 1 by 2, 1 by 4 and 3 by 8. And in these three examples, denominators are different. And if the denominators are different, it is indicating that these three fractions these three fractions do not have a same. That means total number of parts are not same. Here the total number of parts is 2. Here the total number of parts is 4. And here the total number of parts is 8. Because the denominator tells us about the total number of parts in one whole. Okay. So here the total number of parts in each fraction is different. And that's why it is unlike fraction. अरे वाह कितना easy था. And as you can see, there is some example towards my left hand side. These are the examples of like fractions. ठीक है, ये सारे के सारे like fractions हैं. And then now you can see another photograph towards my left hand side. And in this photograph you can see the like and unlike fractions both are there. Okay, ऊपर साइड में like fractions है और नीचे साइड में unlike fractions है. I hope you understand. बहुत simple है. If the fractions have a same denominator, that means the total number of parts in each fraction is equal, then it is a like fraction. And if it is not equal, that means the denominators are different, they are not equal, then we can say that it is a unlike fraction. I hope you understand about the like fraction and unlike fraction. ठीक है, like क्या होता है और unlike fraction क्या होता है. I hope आपको समझ में आ गया होगा. So please note down in maths notebook. You have a 30 seconds. Then we will move towards the unit fraction. उसके बाद हम लोग unit fraction की तरफ चलेंगे. Okay. Then we will move towards the proper, improper and mixed numbers. Listen my dear students. उसके बाद हम लोग proper, improper और mixed number की तरफ चलेंगे. ठीक है. So quickly note down in your maths notebook. Okay, dear students, so now we are moving towards the next topic, that means unit fraction. It is not a next topic, it is the next part of types of fraction. Okay, so this is a third type of fraction, and it is a unit fractions. Okay, what is meant by unit fraction? A fraction having a numerator is equal to 1. Okay, unit fraction किसको कहा जाता है? A fraction whose numerator is equal to 1. Numerator 1 ही होना चाहिए. Then we will say that it is a unit fraction. इसका सिंपल सादा मतलब ये है कि whatever the denominator is, we want numerator is equal to 1. That means we want only one part out of the total number of parts. Okay. So what is a definition of unit fraction? If the numerator is equal to 1, then the fraction is called as the unit fraction. एक फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए. दैट मीन्स 1 is the numerator, whatever the denominator is, it is called as unit fraction. ठीक है, unit fraction. Okay, so now here as you can see, it is a diagram of 1 upon 4, that is 1 by 4, 1 by 2 and 1 by 3. In the first fraction, the one object is divided into 4 equal parts, and out of the 4 parts we are taking only one part.
Listen, dear students, we are counting only one part. So it is 1 by 4. So here the numerator is 1. It is a unit fraction. That means one part out of the total number of parts. Total number of part 4 ho, chahe 10 ho, ya whatever, jo bhi ho. We want only one part out of the total parts. Okay. Now here it is 1 by 2. The total number of part is 2, but we are taking only one part out of the two parts. So it is also a unit fraction. This is also 1 by 3. Okay, 1 by 3 also have three equal parts. This one object is divided into three equal parts, but we are taking only one part, and that's why it is also a unit fraction. Numerator is equal to 1. That means it is a unit fraction. Understood, everyone? Okay. Now let's move towards the proper fraction and improper fraction. Listen, my dear students. Listen. अब ध्यान से समझो. I am making another dedicated video. एक अलग से वीडियो बना रहा हूं. On in that video we will discuss about only and only about the proper fraction, improper fraction, and there is another way to write improper fraction, and that is called as mixed number. Improper fraction को ही लिखने का एक नया तरीका है, that is called as mixed number. ये तीनों चीजों को मैं इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, बट हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है, let's see the what is a proper fraction and what is the improper fraction. Okay, अब ये proper fraction और improper fraction होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से समझो. मैं एक साइड में खड़ा हो जाता हूं. ठीक है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर फ्रैक्शन. पहले ये किताब का कीड़ा पढ़ लेते हैं. दैट मीन्स वॉट एवर इज रिटन इन द बुक, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर अपना नया ज्ञान लेके आएंगे. ठीक है, ओके. दैट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction whose numerator is smaller than the denominator, then it is called as proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, then it is called as proper fraction. If the numerator is less, if the numerator is less than denominator, then the fraction is called as proper fraction. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर है छोटा, डिनोमिनेटर इज बड़ा, is called as proper fraction. The example is a pyramid. जब हमारे घर पर नहीं, जब हमारे मोहल्ले में हंडी फोड़ने जाते हैं, वी आर मेकिंग अ पिरामिड, द 10% नीचे खड़े हो जाते हैं, देन द 9%, देन 8 4 5 4 3 2 1, और फिर ऊपर में चढ़ के मटकी फोड़ देता है. इट इज लाइक अ पिरामिड. डाउन साइड देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एंड अपर साइड जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वहां क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल इज डिक्रीजिंग. ऊपर में कम, नीचे में ज्यादा. दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर अरेंजमेंट टू मेक अ पिरामिड. पिरामिड बनाने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट ऐसा है ना. वी विल मेक अ, इफ यू वांट टू मेक अ पिरामिड, वी विल टेक अ ग्रेटर नंबर ऑफ ब्लॉक्स और ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल डाउन साइड. अगर आप ब्लॉक से बना रहे हो तो ज्यादा ब्लॉक्स नीचे रखने पड़ेंगे और ऊपर में छोटे छोटे ब्लॉक्स आएंगे. सो इट इज यू आर मेकिंग अ पिरामिड, तो पिरामिड प्रॉपरली बन जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या है? इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर इज बड़ा. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर फ्रैक्शन. इफ द न्यूमरेटर इज less than the denominator, then the fraction is called as the proper fraction. And the example is 1 by 7. Here in the 1 by 7, the 1 is a numerator, 7 is the denominator, and the 7 is greater. Numerator is smaller, 1 is smaller than 7. It is proper fraction. 5 by 9, 5 is the numerator, 9 is the denominator. 9 is bigger, 5 is less. So it is proper fraction. 4 by 6. 4 by 6 is also proper fraction because the numerator is smaller and the denominator is greater. Denominator बड़ा है, numerator छोटा है, that is also a proper fraction. अब आपके दिमाग में सवाल आ गया होगा, सर ये 1 by 4 भी proper है क्या? Yes, it is a proper fraction as well as unit fraction. ये 1 by 4 unit fraction भी है, proper fraction भी है, दोनों है, because it is following the property of unit fraction. Unit fraction is saying that I want numerator 1, मुझे numerator 1 चाहिए.
बाकी डिनोमिनेटर कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं. Okay, it's okay. So it is unit fraction. Here 1 by 7 is a proper fraction as well as unit fraction. ये 1 by 7 जो है unit fraction भी है, proper fraction भी है. Okay, that means what? You can say that unit fraction is a proper fraction. All the unit fraction, जितने भी unit fractions है, are called as proper fraction. But ऑल द प्रॉपर फ्रैक्शन इज नॉट यूनिट फ्रैक्शन. सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन नहीं है. यूनिट फ्रैक्शन सिर्फ वही है जिसका न्यूमरेटर 1 है. इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, लिसन डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इन योर बुक. बुक क्या बोल रही है कि आपका न्यूमरेटर छोटा चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन. बट इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू से दैट why we are saying that it is proper fraction. It is not written in your book. आपके बुक में वो लिखा ही नहीं है. अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो इससे क्या होने वाला है, इसको इमेजिन करने के लिए आपकी बुक में कुछ भी नहीं है. नथिंग इज देयर. So that's why I'm making a new video, and in that video you will properly understand what is a proper fraction. But अभी सिर्फ इतना समझ लो कि आपका न्यूमरेटर छोटा चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए, then it is called as proper fraction. वो proper fraction है. ठीक है. Then there is a improper fraction. Improper fraction means what? If the fraction have numerator is greater, if the fraction has numerator which is greater, numerator is greater and denominator is small, then it is improper fraction. That means if I said make a pyramid बनाओ, तो एक जन को मैं नीचे खड़ा कर दूं और ऊपर उसके सर पे 10 जन को खड़ा कर दूं, तो नीचे वाला तो मर जाएगा, है ना. सो इट इज नॉट अ प्रॉपर वे. इट इज नॉट अ प्रॉपर वे टू मेक अ पिरामिड. पिरामिड बनाने का सही तरीका नहीं है. ठीक है. सो इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नीचे छोटा ऊपर ज्यादा लोग, भैया प्रॉब्लम हो जाएगी. इट इज इम्प्रॉपर वे टू राइट अ फ्रैक्शन. ठीक है. व्हाट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? मुझे पता है क्वेश्चन दिमाग में आ गए बहुत सारे. Improper fraction means what? If the numerator is greater and the denominator is small, then the fraction is called as improper fraction. Like 7 by 2. Here in the 7 by 2, मुझे पता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ चुका है, sir how can we color 7 part out of 2? 7 को कैसे कलर करेंगे? 2 ही पार्ट्स है. डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डिस्कस इट लेटर. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं. एंड आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग होने के बाद आई एम मेकिंग द वीडियो. अब भी तुरंत बनाऊंगा मैं. ठीक है. सो 7 by 2 इज अ फ्रैक्शन. 7 by 2 is a fraction whose numerator is 7 and the denominator is 2, and here the numerator is greater and the denominator is small, and that's why it is improper fraction. इसलिए वो improper fraction है, ऐसा आपकी बुक बोलती है. Such type of definition is written in your book, but I will explain in the next video why it is improper and why it is proper, and what is the exact meaning of proper and improper fraction. We will visualize it. हम लोग उसको visualize करेंगे. और अगर वीडियो नहीं बना, which is बना तो अच्छा है, नहीं बना तो which is very good, I will take activities. Okay. Now 15 upon 9. 15 upon 9 is also improper fraction because here the 15 is greater, 9 is smaller. नीचे 9 लोग हैं, ऊपर 15 लोग हैं. बेचारे 9 लोगों की जान पे आफत आ चुकी है. That means it is improper fraction. Here 100 upon 3. 100 upon 3, it is also improper fraction because the numerator is greater than the denominator. Denominator में 3 ही लोग हैं, उसके सर पे मैंने 100 लोगों को बिठा दिया. And now वो 3 तो गए. Okay, that is a improper fraction. मोटा मोटा तौर पे बेसिक समझ में आ गया ना आपको what I'm saying? Like fraction means what? A fraction whose all the denominator of fractions, we have the different fractions, अलग अलग fractions हैं, and all the fraction have the same denominator. Same denominator means what? All the fractions are representing total number of parts. जितने भी total number of part है सब में equal है. Then it is a like fraction. If the fraction have different denominator, that means each fraction have the total number of parts different. सब में सभी में total number of parts अलग अलग है.
नीचे में 7 है तो 7 है, किसी में 10 है तो 10 है. So there is a different denominators. Then it is a unlike fraction. Then there is a unit fraction, a fraction having the numerator 1, that is called as unit fraction. वो unit fraction है. Then we will understand about the proper fraction. Proper fraction वो है जिसका numerator छोटा और denominator बड़ा है, that is called as proper fraction. Then there is a improper fraction. Improper fraction means what? There is not a proper way to write a fraction. ये proper तरीका है ही नहीं, ठीक है, but it is a fraction. इन दोनों को लेकर के साइंटिस्ट लोगों में बहस छिड़ गई थी कि whether it is a fraction or not, whether it is a fraction 7/2 is representing a fraction or not, क्या 7/2 fraction है भी या नहीं है. Then they conclude that it is a fraction, it is a new type of fraction, ये कुछ अलग तरह का fraction है और उसको फिर एक नया नाम दिया गया, that is called as improper fraction. We will discuss this topic later in next video in detail, ठीक है. So that is a improper fraction. Improper fraction simple है, न्यूमरेटर बड़ा चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा चाहिए, ठीक है. That is called as improper fraction. Understood everyone? You understand a simple basic things about the types of fraction. I hope you understand, and I'm making a dedicated video on types of fraction, जिसमें से like fraction आपको बहुत easy है, unlike भी बहुत easy है. Then unit fraction is also very easy. आने वाले वीडियो में, in the next video, I am going to discuss about the proper fraction and improper fraction in detail. वो आधे घंटे में सिर्फ इन दोनों को ही पकड़ के खत्म कर देंगे. दैट मीन्स समझेंगे पहले फिर फिनिश करेंगे, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. क्विकली नोट डाउन इन योर मैथ्स नोटबुक, एंड आई एम सेंडिंग अ वन स्मॉल वर्कशीट. यू हैव टू सॉल्व दैट वर्कशीट एंड सेंड बैक टू मी. मेरे पास वापिस आना चाहिए, ठीक है. ओके, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.